तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भवानी। समस्त को आम चैनल साइड स्टडी क्लासेस को स्वागत। तो आज तुम मान वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम प्रैक्टिस सेट 12 जनरल अवेयरनेस नहीं आसे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ी आलोचना करवा जोटा तुम मान आगामी एग्जाम जमी बीएड आसी तुम बहुत ही बेनिफिशियल हम आई होप एवं तुम मैंने समस्ते आम क्लास को भल भाव देखु फर्स्ट रु लास्ट पर्यंत निश्चित भाव देखुव मुझे आशा करुच्ची एवं ता सहित जो मानक भी आम क्लास टिके भी भल लगे से क्लास को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दियो। प्रत्येक क्लास को शेयर करो जो माने फ्री ऑफ कॉस्ट बीएड पढ़िया चाहते और जो मान पाक वीडियो पहुंची पारना। ठीक है, तुम मान काम तुम मान गोटे गोटे शेयर गोटे गोटे लाइक आमको मोटिवेशन आम आम आहरी नुआ नुआ वीडियोस आपण माने कौन करू। ठीक अच्छे, ता सहित है छुआ आउ गोटे बड़ जिनस है कौन ना जो मैंने हम चैनल रे नुआ अच्छे से माने हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दियो। ठीक अच्छे, एटा हम टेलीग्राम हैंडल माने जॉइन कर परिबे एवं एटा हमर हैला कोन ना कोडा ना स्कैन हियरटा हैला हमर कोन ना यूट्यूब हैंडल। ओके, एथरे आपण माने जाई कोन कर परिबे ना विजिट कर परिबे हम यूट्यूब चैनल को। ठीक अछि, तो देखिबा आज रे प्रथम क्लास प्रथम क्वेश्चन कोन अछि। ओके, देखो आज रे प्रथम क्वेश्चन कोन अछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट ओके which of the following concept was proposed by Kothari Commission when it started that each school should be attended by all children in the neighborhood irrespective of the caste, creed, community, religion, economic condition or the social status, so there would be no segregation school। एटा बहुत ही बढ़िया बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन छ अछि, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तुम माने कहछ कोन हबो यार आंसर, कोन हबो यार आंसर? secondary school, neighborhood school, home school and community school। Koda, which of the following concept was proposed by the Kothari Commission when it started that each school should be attended by all children in the neighborhood irrespective of caste, creed, community, religion, economic condition or the social status, so therefore would be no segregation school। okay, कौन हबो? neighborhood school। okay, neighborhood school is the right answer। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following option was identified as the biggest challenge for the achievement of the goal of education for all by 2015। 2015 सुधा biggest challenge for the achievement of the goal of education for all। ओके, समस्त पाई समान एजुकेशन दिया जिवो। एटा कोउथिरे हला छुआ को माने माने कोन हेतिला तेत्रे कोन ऑप्शन टा एथरे राइट अछि? एक्सेस एंड द एनरोलमेंट फॉर चिल्ड्रन, शॉर्टेज ऑफ द क्वालिफाइड टीचर्स, वेस्टेज एंड द स्टैग्नेशन ऑफ द लर्निंग एंड शॉर्टेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बुक्स। कोनटा हबो छुआ? व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? कोनटा हबो छुआ? The biggest challenge for the achievement of the goal of education for all, shortage of qualified teachers। okay, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following policy document emphasized the need of for change in the following words? Education in India stand to the crossroad today, neither normal linear expansion and nor the existing peace and the nature of the improvement can meet the need of the situation। माने से कहूची जे माने ए जो टैगलाइन टा एटा कोथरे बा कहा सहित रिलेटेड अछि? रिवाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोटा हबो छ? न्यू एजुकेशन पॉलिसी डायरेक्टली एटा हबो नै, एटा हबो नै, एटा हबो नै, डायरेक्टली न्यू एजुकेशन पॉलिसी हबो। कहूची जे क्यों पॉलिसी एम्फसाइज दिसला जे एजुकेशन इन इंडिया स्टैंड फॉर द क्रॉसरोड टुडे, माने गोटे माध्यम देन नाइदर नॉर्मल माने लिनियर एक्सपेंशन नॉर द एक्जिस्टिंग पीस ऑफ नेचर of improving can meet the need of the situation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following commission started our secondary education remains the weakest link in our educational machinery and need to urgent reform। माने हम सेकेंडरी एजुकेशन टा हला गोटे वीक लिंक रहउची जहा को हमें जल्दी रिफॉर्म करिवा दरकार। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन, द एजुकेशन कमिशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन, नेशनल नॉलेज कमिशन कोटा हबो छ?
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन कौन करथिला ना सेकेंडरी एजुकेशन रे कौन सी प्रकार रिफॉर्म हमकु दरकार ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईईपीए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईईपीए नेशनल इंडस्ट्री फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंट्रांस प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोनटा हबो छ व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर एटा हबो एनआईईपीए जल्दी तुम माने कहो ए बी सी डी रे भी कहले हबो ठीक अछि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ठीक अछि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द राइट आंसर एनआईईपीए ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेशनल टैलेंट सर्च यूनिट and survey of the data processing unit are the unit of which of the following organization central board of secondary education national institute of education state board of teacher education center for advanced studies कौन होबो छ which one is the correct answer जे कहू जे national talent search unit or survey and data processing unit are the unit of which of the following organization क्यों organization से तो related एनआईई ओके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सहित रिलेटेड ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो with reference to the vocational education with reference to the vocational education the Kothari commission emphasized upon the need of product oriented education and necessity of with the reference to vocational education the Kothari commission emphasized upon the need of product oriented education and the necessity of performing art okay peace education citizenship education and work experience with the reference of vocational education the Kothari commission emphasized कहाँ पर emphasize दिया upon the need of product oriented education and necessity of कोणता हवो छ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर वर्क एक्सपीरियंस ओके कोठारी कमिशन द एम्फसाइज देथिला कहा पर ना वर्क एक्सपीरियंस ऊपर अधिक देथिला ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 and the program of the action 1992 emphasize the adoption of which of the following language at the school level any other foreign language english language mother tongue कोटा हबो and regional language 1992 adoption एटा कहां पे emphasize देथिला ना मदर टंग ओके मदर टंग ऊपर emphasize देथिला which of the following statement is correct reference of the national council education research and training ncert ऊपर केडा एटा तो रिपीटेड क्वेश्चन छ एटा रिपीटेड क्वेश्चन मु एटा कहबिनी तुम मान को the national policy on education 1986 and program of action 1992 emphasize the adoption of regional language as the medium of instruction at which of the following stage of education upper primary university high school and primary एटा भी रिपीटेड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल रे एटा हितला ठीक अछि यूनिवर्सिटी लेवल रे एटा को रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट कराय जाई थिला ठीक अछि which of the following is the petroleum wax कोटा अछि मध्य रुचा प्रेफिन wax ना जोनोबा wax ना कार्नोबा wax ना बी wax तो आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेफिन wax पेट्रोलियम wax से तो के रिलेटेड ना प्रेफिन wax ठीक अछि प्रेफिन wax is obtained from the petroleum by the dewaxing light lubricant oil stocks and it is used to candles wax paper and polishes cosmetics and the electrical insulators it assists in the extraction perfume from the flower and from the base of the medical ointments ठीक है what caused a moving body to resist a change in its state of motion what caused a moving body to resist a change in its state of motion displacement acceleration inertia velocity एटा तुम माने जल्दी को साइंस पिला ए बी सी कोटा बचवा what cause of moving body to resist a change in its state of motion एटा इनर्शिया हबो इनर्शिया रे माने तुम माने ओडिया रे को कोन हबो छुआ इनर्शिया रे माने ओडिया रे कोन हबो inertia रे माने कोन हबो tendency of an object is resist changes its velocity a object can resist has zero velocity and in the absence of the unbalanced force will remaining with the zero velocity such an object will not change its state of the motion unless act upon by an unbalanced force ठीक है back to village slogan was given by Lenin Mao Nehru
एंड पटेल कोटा हो बैक टू विलेज माओ ओके बैक टू विलेज स्लोगन टा कार थिला माओ कर माओ माओ किए थिले एड्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फंगस माने हेलमिंथ वायरस कोटा हो छ एड्स इज एड्स रो फुल फॉर्म कहबो तुम माने एड्स रो फुल फॉर्म कहबो एवं वायरस पाई हेता है acquired deficiency syndrome okay is a माने कौन chronic potential life threatening condition used caused by the human immunification virus okay जाको HIV बोली कहा जाए okay next question देखो which of the following scheme is launched for the school for the school going children लोक जम्बिश मिड डे मील सर्व शिक्षा अभियान एंड आयुष कोटा आवच्छा मिड डे मील ओके स्कीम टा लॉन्च फॉर द गोइंग चिल्ड्रन सेमान को पई कोन कराइला ना मिड डे मील सिस्टम टा कराइतला ठीक अछि मिड डे मील सिस्टम टा तांको पई कराइतला छुआ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड केबे इंडियन नेशनल कांग्रेस छुआ फाउंड हेतला 1878 1875 1882 1885 केबे होबो छुआ 1885 केते थर कोई सारची प्रथम चेयरमैन किए थिले उमेश चंद्र बनर्जी ओके सेकंड चेयरमैन किए थिले कोई तुम माने द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ कार एओ ह्यूम एलन एटोवियम ह्यूम ठीक है जी उमेश चंद्र बनर्जी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हाट डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन द माने के डिवाइडेड कोठी छुआ स्प्लिट हेतला सूरत रे छुआ सूरत स्प्लिट हेतला ओके सूरत स्प्लिट आंसर 1907 सूरत स्प्लिट रे इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट आ एक्सट्रीमिस्ट हितरे कोन भाग हेतला ठीक अछि which was the only session of the Indian National Congress presided over the Mahatma Gandhi कोठी लाहौर बेल्जियम हां बेलागांव और लखनऊ और कोलकाता एटा बेलागांव हबो बेलागांव सेशन 1924 जब महात्मा गांधी को द्वारा प्रेसिडेंट हेतला ठीक अछि बेलागांव सेशन emphasize the non violent resistance ऊपर से emphasize देले who was the second woman president of Indian National Congress सरोजिनी नायडू फर्स्ट थिले आनी बेसांत ओके फर्स्ट थिले आनी बेसांत सेकंड हेला छुआ सरोजिनी नायडू वो सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट एठी से आनी बेसांत देछि आनी बेसांत फर्स्ट नॉन इंडियन थिले से नॉन इंडियन थिले आनी बेसांत ओके नॉन इंडियन थिले बट सेकंड तो थिले सरोजिनी नायडू ना कोन मोर एग्जैक्टली मने पड़छि ठीक अछि या पर टिक कंफ्यूजन अछि हम नेक्स्ट क्लास रे आको क्लियर करिवा ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे आको क्लियर करिवा टिके खाली रिकॉल करिनी रिकॉल करे नवा तो जानिबा जे हु वाज द सेकंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वुमेन प्रेसिडेंट हु वाज द सेकंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वुमेन प्रेसिडेंट के हो छुआ तुम माने मधरे जदी के जानि छ जदी को मते भी से लागु सरोजिनी नायडू एटी आंसर टा भूल अछि छुआ एटी आंसर टा भूल अछि सरोजिनी नायडू हबो काइना आनिवेशन छुआ नॉन इंडियन भाबे फर्स्ट थिले सेकंड थिले से सरोजिनी नायडू पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा पूरा इजी क्वेश्चन हु प्रेसिडेंट ओवर द जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट केते थर को आइछि द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय एटा बढ़िया क्वेश्चन आसला स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स ऑफ लोकसभा द्वारा स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड हेता है द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल आफ्टर द जनरल इलेक्शन once the lok sabha is constituted the process of electing the speaker of lok sabha the parliament is begun with
क्वेश्चन आवर ठीक अछि पार्लियामेंट सदा कहा द्वारा माने क्वेश्चन आवर द्वारा आरंभ होय which statement is below is correct. The Parliament of India consists of three parts: the President, the Council of State, and the House of People. The President of India is not a member of either house. एटा शायद मते लागुची हैला माने all of these हबो are correct. माने the President of India is not a member of either house of Parliament. The Parliament of legislative organ is the Union government. एटा all of these हबो अच्छा बुझिपारल एटा all of these हबो समस्त सहित रिलेटेड बस पार्लियामेंट सहित भी ठीक अछि तो क्लास तुम मन को केमति लागला क्वेश्चन गुडी तुम मन को केमति लागला मते कमेंट सेक्शन में जणाइबो आ कोन कोन सब प्रॉब्लम्स रहउची असुविधा रहउची 7894072404 नंबर रे मध्ये कांटेक्ट करि परिबो 7894072404 क्लास जदी भल लागते शेयर लाइक फॉलो कमेंट एंड नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देबे जेमति हमर प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन बाकू जल्दी से जल्दी पहुंची जीवो एवरी न्यू वीडियो रो एवं आपन माने देखि परिबे बेनिफिशियल ले परिबे तो सेति पई क्लास को हम एतिके रखिबा टेक केयर जय जगन्नाथ सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है जी।